Hello guys and welcome back to my channel Julie's Classroom. So what's up? I hope you all are doing great. So you all might have noticed the slight background change. That is because we are not shooting a classroom video this time. We are shooting something called KTB that I have already told you guys about. So this is one of my personal favorite programs that I'll be giving you guys. First, let us know what KTB is and then I'll resume my video. So KTB, it stands for Knowledge Tidbits. That is knowledge ke kuch tukre that I'll be giving you all. So first, all of that I have taught you is about grammar. Noun, parts of speech, letters, alphabets is all about grammar. So the fact is that after some point, you have learned grammar and then you say, okay, we have learned grammar, now we want to speak English. So the KTB sessions that I'm going to be holding for you guys is the part between I have learned grammar and I'm speaking English. Is that how to speak English? So in our KTB session, I'll be telling you some tidbits, some knowledge facts that you need to know before you actually start speaking English and actually help you at all. So the fact here is this How to Learn English program is going to be held by me. It is going to be hosted in different areas, different locations. I'll give you all different views so that you can refresh your mind. Apart from looking at that old blackboard, I also hate that sometimes. It seems boring. Anyway, so in this session, हम लोग करेंगे some how to speak English parts. Before that, I want to do a small recap of what I've told you, what I've learned, what I've taught you in those some few days. So first one is our alphabets, that is letters, consonants and vowels, and then parts of speech, which I release in two parts because after all it's parts. Anyway, so after parts of speech, we have done noun, first part, that is common noun and proper noun, most common prevalent type of noun that we are facing nowadays. ज़रूर पड़ेगा हमें, because everything we see around us is nouns. After all, we call everything by their names and names are nouns. So after we learn all those grammar parts of speech and then whatever that is in grammar, active, passive voice and all, we have to actually speak English. In this KTB session, I'll be answering some of the important questions as you have doubts. Should we or should we not learn grammar to speak English? What should we learn in grammar to speak English? How should we speak English? Those type of questions are going to be answered here by me. So today's part is that audience. Let's go to audience. हमारे audience यहाँ पे कौन होंगे? So let me repeat. हमारे audience यहाँ पे होंगे competitive exams वाले बच्चे जो कि competitive exam के लिए prepare कर रहे हैं. So they need to learn all of it detailed में. Is that everything should be in depth and their knowledge should be particular in the matter, because English is a language. अब वो जो भी लिखेंगे English में लिखेंगे, is that तो उन्हें English में particular रहना होगा. No mistakes in that. After that, regional students. So regional students is a big motive actually. उन्हें पढ़ाना, उन्हें सिखाना is a big motive. English is a language, and as we know, language is a first step of speaking. Listening language is the first step of speaking, because हम बड़े होते हैं, पहले पैदा होते हैं, then we are infants. When we are like 1 year old or something, we start speaking like mama, papa, small words, baby steps. So before that, we must have listened to our parents, our elders speaking. तो हमारा जो environment होता है, that is basically our way of learning a language and being able to actually speak it in our real life. So वो आपका part हो जाएगा. Since you do not belong to an area or region that people use English in, so you have to cope up with English through different social media platforms that are YouTube. Actually, that is very helpful for you all. Apart from scrolling reels, you can see our reels as well, learning vocabulary. And apart from seeing the other videos, which are also helpful for you, you can see these videos as well to cope up with the English language. Will teach you something new that is being introduced in other parts of the world. In speaking English, we can give you that here so that you can make it your environment, artificial environment, and try to learn English through online methods. So this will help you a lot. So regional students के लिए this is also very helpful, because उनको तो English के साथ daily exposure नहीं होता होगा. So हमारे channel, it will help them. And apart from that, I have to introduce a new class. I have already introduced the class that is of mothers. So mothers के लिए this is a very important and basic step. आजकल के बच्चे they are all learning English. उनका सारा communication, studies, etc. daily activities English में ही execute हो रहा है. तो mothers, you all need to learn English, because
बच्चे के साथ कनेक्ट करना है ना, तो दैट कनेक्टिंग पॉइंट, फॉर दैट यू नीड टू लर्न इंग्लिश. सो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मदर्स, बिकॉज मदर्स आर नॉट लेस देन बेबीज. उन्हें भी सिखाना बहुत हार्ड होगा, बिकॉज बेबी को पालने के बाद बेबी के मेंटालिटी में हो जाने से आपको बेबी के मेंटालिटी से ही हम सिखाएंगे. द वे योर किड्स आर लर्निंग, यू लर्न द सेम वे, ताकि आप वैसे ही कोप अप कर सको. एंड हम आपको उतना ग्रास रूट से इधर पढ़ाने वाले हैं. दिस अकॉर्डिंग टू मी will be a great help for you all, for the beginners especially, because beginners को एक special treatment चाहिए होता है, and I believe we give that special treatment to you all. Here you can learn while having fun, so आप बोर नहीं होंगे, and different background भी आपको मिलने वाले हैं. So in today's KTB ज़्यादा कुछ नहीं होगा. First video है, I don't want to make you all confused of ये क्या है वो क्या है वाला. The fact is that कमेंट्स जब आ रहे हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, यू हैव अ सिचुएशन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लर्निंग ऑल द ग्रामर वैसे तो कभी कंप्लीटली ख़त्म नहीं होगा, बट आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ लर्निंग ग्रामर, आप एक बात पे आते हो दैट हम ग्रामर सीख चुके हैं, नाउ वी वांट टू स्पीक. नाउ सीखना एंड स्पीकिंग एक्चुअली बोथ आर वेरी डिफरेंट. सो आप जब एक्चुअल conversation situation में आते हो, that is when you go outside and you actually need to apply your knowledge. आप speaking में translating में थोड़ा time उधर कमा देते हो, because you have to actually convert the sentences from your regional language to English in the back of your head. तो आप एक सेकेंड, ये क्या है वो क्या है वो क्या है, here we will use this verb or that verb, auxiliary verb, is or am or what, ऐसे kind of situation you all will face. तो वो कैसे face ना करें, आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर्स जो मिलेंगे, वो सारे टिडबिट्स दैट उन्हें कैसे अवॉइड किया जाए, किस मैनर में आप धीरे धीरे ट्रांसलेटिंग को, वी कैन नॉट स्किप इट परफेक्टली बिकॉज यू ऑल आर लर्निंग आफ्टर ऑल, सो यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स एंड उस हिसाब से ही आपको डेवलपमेंट करना होगा अपना. तो आप लोग कम्प्लीटली अभी आपके ट्रांसलेटिंग पार्ट को स्किप तो नहीं कर सकते, बट विल हेल्प यू कि आप कैसे धीरे 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 उसे मिनिमाइज कर सकते हो, एंड आफ्टर सम पॉइंट इट बी वैनिश्ड. सो आपको वो टिडबिट्स कि आप कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो, हाउ टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर, व्हाट शुड यू डू टू स्पीक फ्रीक्वेंटली फ्लुएंटली, एंड हाउ शुड यू अप्लाई इंग्लिश इन योर डेली लैंग्वेज. लाइक सपोज से आपका एनवायरनमेंट रहेगा कि आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, कुछ और लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, सपोज से आप रीजनल एरिया से हो, यू एक्चुअली वांट टू लर्न इंग्लिश बट योर पेरेंट्स दे आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. सो व्हाट शुड यू डू इन दैट सिचुएशन, विल टेल यू थिंग्स लाइक दैट, एंड सम क्वेश्चंस लाइक should we learn grammar or not to speak English, which one should we use, how should we speak confidently, questions like that. All the questions will be answered here in the KTB. So this is also a very important program that we are learning and which we are teaching you all here, because actually जो हम implement करते हैं life में, आप KTB से ही सीखोगे. क्या implement करना है वो आपके classes में मिलेगा, but कैसे करना है आपको KTB से मिलेगा. So इस lesson में तो हम कुछ नहीं सीखने वाले, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट KTB में आपको क्या सिखाया जाएगा. इसके लिए तो बस इतना ही, बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ. इस KTB का फर्स्ट पॉइंटर, वट एवर यू लर्निंग ग्रामर में, आप उसे प्लीज़ सेंटेंसेस बनाइए, अपने खुद के सेंटेंसेस. मैं इट बी रॉन्ग करेक्ट बाद में आप यूट्यूब से, गूगल से, ट्रांसलेटर से चेक कर सकते हैं, बट आप अपने खुद के सेंटेंसेस बनाइए. लाइक मैंने आपको कॉमन भी सिखाया है, कॉमन नाउन, तो आप कुछ कॉमन नाउन्स नोट डाउन कीजिए. सपोज से 10 कॉमन नाउन्स, 10 प्रॉपर नाउन्स, डिफ्रेंशिएट कीजिए कॉमन प्रॉपर कौन सा है, एंड सबसे एक एक सेंटेंसेस बनाइए. आपको मैंने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सिखाया है, तो आप सपोज से नाउन को एज अपना सब्जेक्ट रखोगे, उससे सेंटेंसेस बनाओगे. यू हैव टू प्रैक्टिस इट, एक्चुअली स्पीक इट, बिकॉज किसी भी लैंग्वेज में आपका प्रोग्रेस स्पीकिंग से ही होता है. तो यू हैव टू एक्चुअली स्पीक इट एंड प्रोग्रेस लाइक दैट ओनली. सो एवरी डे 10 to 20 minutes एटलीस्ट, ज़्यादा नहीं, at least 10 minutes, let's take that, 10 minutes you have to speak English, because language है ना, बोलना तो पड़ेगा after all. आपको after all सीख के क्या करना है, बोलना ही तो है. तो you have to speak from now only, because वो लोग जो कहते हैं कि अभी ग्रामर सीख लो उसके बाद vocabulary सीखना फिर completely सीख के बोलना, that is a different wrong concept. आप सब लोग सीखोगे, उसके बाद लास्ट में आपको सडनली बोलने के लिए बोला जाएगा, तो आप बड़े बड़े पैराग्राफ कब कैसे ही बोल पाओगे. तो आपको अपना माइंडसेट रेडी रखना पड़ेगा that we have to speak English. If we speak English two sentences of English every day, then we'll eventually be able to speak a paragraph within no time. We'll not find the difference कि हमने कब इतना प्रोग्रेस कर लिया, हमें खुद नहीं पता चलेगा. So baby steps are most important. मत सुनिए उन लोगों को जो कहते हैं कि अभी थोड़ा completely सीख लो उसके बाद बोल देना.
अगर आपकी गलती होगी तो, बिकॉज गलती इज एन अनअवॉइडेबल पार्ट. माई फर्स्ट लेसन फ्रॉम दिस KTB इज स्पीक इंग्लिश एवरी डे, एंड सिंस आई हैव टॉट नाउन्स, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उससे सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कीजिए एंड रोज रोज सीखिए. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस आपका अभी स्टार्ट ही हुआ है, मैं आपको और भी आगे कुछ देने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें. तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगी, आगे आने वाली चीज़ें हैं एडजेक्टिव्स एंड आपके एडवर्ब्स, विच कंस्ट्रक्ट मेनी नाउ वेरी वर्ड्स, जिसमें आपको बहुत सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स रहेंगे. वी एक्चुअली नीड टू यूज अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो कि आपके नाउन को, वर्ब को क्लासीफाई करेगा, उनके बारे में और कुछ बताएगा. सो हम जो वोकैबलरी दे रहे हैं, रोज 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 वोकैबलरी को रिव्यू कीजिए. आपकी आसपास की चीज़ें, सपोज से मेरे आसपास क्या है अभी, इट्स अ टेबल, इट्स अ चेयर, बोर्ड, विंडो, न्यू काइंड ऑफ विंडो, अ पेंटिंग, बुक्स, वट एवर दैट इज. आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में आसपास देखिए कुछ चीज़ों को, सब इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए. समथिंग दैट यू डोंट नो, सर्च इन यूट्यूब, गूगल इमीडिएटली, ताकि आप न्यू वोकैबलरी लर्न कर सकें. एंड हम भी आपको अडेप्ट करने के लिए अपने स्टाइल से आपके डेली लाइफ में जो यूज़ होगा, बहुत यूजफुल वोकैबलरी रोज रोज दे रहे हैं. तो आप शॉर्ट्स में डू चेक इट इन आर यूट्यूब पेज, आपको बहुत यूजफुल होगा वो सारे वोकैबलरीज. जैसे कि हम आपके अभी विंटर वेजिटेबल्स एंड विंटर क्लोथ्स के सीरीज स्टार्ट करके दिए हैं, बिकॉज वी नो हम आपको सीजन के हिसाब से देंगे, व्हाट विल बी यूजफुल फॉर यू, वी नो दैट. सो हम आपको उसी हिसाब से देंगे. सो आप उसे रोज रोज रिव्यू कीजिए एंड डू स्पीक डेली. इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर डेली स्पीकिंग, इन योर एक्चुअल स्पीकिंग. जब आप बहुत सारे बोलने को प्रेप करेंगे, बहुत सारे बोलने का आपका टाइम आएगा, उस टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा. सो अपकमिंग के लिए आपको न्यू न्यू वर्ड सीखने हैं, वोकैबलरी में टच के साथ रहना. तो उतना ही आज के लिए, एंड आई होप दैट यू ऑल लाइक द वीडियो एंड रिव्यू ऑल द पॉइंट्स स्पेसिफिकली. एंड इफ you can, then take a paper and pen every time you start a KTV, because I know I'll be giving you something very important. तो आपको उसे नोट डाउन करना है एंड टेक इट सीरियसली एवरी डे. एंड जैसे आप हर स्मॉल चीज़ के लिए प्रोग्रेस करते हो, थोड़े 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 करके, बस यू हैव टू प्रोग्रेस इन दिस एज वेल. आपको जो मैं आपको पॉइंटर्स दूंगी, उन्हें रोज़ रोज़ अप्लाई करना है अपनी डेली लाइफ में, तभी वो आपको आगे जाके एक बहुत बड़ा बेनिफिट देगा. एंड देन आपको पता चलेगा कि ओ एक्चुअली हमने पास्ट में बहुत सारा डेवलपमेंट किया है. तो बिफोर यू नो, आप बहुत सारे डेवलप कर चुके होंगे. दैट्स वाई KTB में ऑलवेज टेक अ पेन एंड पेपर विथ यू, मेंटेन द सेम कॉपी. मैं भी करती हूँ. सो thank you so much, and that is all for today's video. I hope you liked it, and if you liked the video, please like the video and subscribe to my channel. Do comment me, because KTB तो आपके comment से ही चलने वाला है. तो do comment me near the comment box and share the video knowledge with everyone, ताकि सब लोग baby steps लेके आगे बढ़ सकें. Thank you so much. Like and subscribe to my video and channel.